Transparency International India has issued a clarification on Shazia Almi's claim on corruption having gone down in the last 45 days in Delhi. Now, Shazia Almi, remember, had published interviews claimed to have quoted a Transparency International India report, which she had said had not been published in the country, to say that corruption had gone down in the last 45 days that the Aam Aadmi Party had been in power. To this, the Transparency International India issued a statement to say that the information given by Shazia is factually incorrect, claiming that they have not undertaken any study on corruption in Delhi, and so there is no question of any such published or unpublished report. Now, the statement has obviously left the Aam Aadmi Party completely red-faced. The party has been pushed completely on the defensive. Now, the Congress, on the other hand, claims that this is yet another lie of the Aam Aadmi Party that has been exposed. और रही बात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, तो हमने कभी नहीं कहा कि उन्होंने किया करके कोई सर्वे दिया है। बात उनसे भी हुई थी और मीडिया के लोगों से भी हम कहते हैं कि भाई आप जाकर के देखो। हम लोगों को जो फीडबैक लोगों की तरफ से मिलता रहा इस दौरान, वो यही मिलता रहा है कि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी की जिंदगी में जो रोजाना जो लूट खसोट थी, उस पर लगाम लगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने अभी तक तो कोई ऐसी स्टडी नहीं की है। जैसे बोली गई पब्लिश या अनपब्लिश रिपोर्ट, ऐसी हमारे पास कोई रिपोर्ट भी नहीं है और ना ऐसी कोई रिपोर्ट है जो अनपब्लिश भी है। तो हमारी तरफ से ना कोई ऐसा सर्वे हुआ है, ना कोई ऐसी रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है। अब आम आदमी पार्टी ने क्या कमेंट दिया वो वही बता सकते हैं। इसमें हमने क्लैरिफिकेशन इशू किया है कि ऐसा हमने कोई सर्वे ही नहीं किया है, तो बेहतर होगा आम आदमी पार्टी बताए। बट हमारा पोजीशन बहुत क्लियर है, ना हमने कोई ऐसा सर्वे किया है, ना कोई ऐसा सर्वे करने का प्लान है। हमारा तो ऑब्जेक्शन है, इसीलिए हम लोगों ने उस न्यूज़पेपर को भी लिखा है कि क्यों ऐसी चीजें छापी गई हैं। और आज हमारी बोर्ड मीटिंग होगी और हम उसके बाद एक डिसीजन लेंगे और बोर्ड मीटिंग के बाद में जो डिसीजन होगा हम कन्वे करेंगे मीडिया को। आप जनता से वायदा करके आए, आपको मौका मिला और आप भाग गए, तो अब ये कुछ भी कह सकते हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों में से इनका इम्प्रेशन बहुत खराब होता जा रहा है कि आप कोई एक आदमी है जो मर्जी है बोल दे, जो मर्जी है कह दे। तो मुझे लगता है आधारित चीजें होनी चाहिए, बेआधारित चीजें नहीं होनी चाहिए। And our correspondent Ankit Tyagi is joining us on the phone line now. Ankit, you've been tracking the AAP very, very closely. TII coming out, issuing a clarification, claiming that they didn't even undertake this study on corruption in Delhi. So really, the Aam Aadmi Party's claims falling flat. They've obviously been left red-faced. Have you spoken to anybody from the party? Well, I've had a word with a few people in the Aam Aadmi Party, and all of them have been saying that they only quoted one newspaper report. It was not that they had quoted that Transparency International has told it to them personally. And the mistake, if it is on the part of the newspaper, then their only fault is that they believe the report of the newspaper. They are saying that generally the feeling in the within the party and within the Delhi setup is that corruption has gone down because of the drastic measures being taken by Arvind Kejriwal's government in the last month and a half. They believe that if a survey was to be done, this will clearly be shown. But yes, the party sees that Shazia Almi might have made a mistake on the basis of a newspaper report. They are attributing it to a certain newspaper which had quoted Transparency International, and are saying that it was only based on that report of a newspaper. They still are saying that it is not a conspiracy, or we did not misquote anything. We only believe the report that has been published by a newspaper. Right, Ankit, now even social media, Twitter in fact is abuzz. A lot of people going after Shazia Almi, claiming that she can't even speak about this report because she claims that it is indeed a study done by an independent agency, asserting that Delhi was cleaner and less corrupt in the Aam Aadmi Party's 49 days, and it will be out soon. So a lot of people now in fact are going after her, launching a scathing attack, claiming that she can't even make these claims considering that the report is not even out yet. Well, absolutely. In fact, this is what the criticism of the Aam Aadmi Party has been, and also about the opposition terming it blatant lie from the Aam Aadmi Party, saying that they are used to lie on such matters. But the party is clearly on the defensive. In fact, most of them not defending Shazia Almi, just saying that she read a report in the newspaper and that is why she quoted it.
but most of them are finding themselves in a very difficult position as far as this entire report is concerned. Not only did they name a very renowned organization as Transparency International, but they also said that they knew what the report was. Now it will be interesting to see what Transparency International, as you heard in the soundbite also, they would be in fact going to their board will take a call on whether they want to send a notice to Aam Aadmi Party or they want a clarification from them. After all that, we would actually be able to know how the party reacts. But as of now, an embarrassing situation. But all of them are still saying that all they did was quote a report in the newspaper. Absolutely, Ankit, stay with us. Obviously, other parties are not missing out on this opportunity to go after the Aam Aadmi Party. Let's just listen to the reactions, in fact, coming in on this story. और रही बात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, तो हमने कभी नहीं कहा कि उन्होंने किया करके कोई सर्वे दिया है। बात जो उनसे भी हुई थी और मीडिया के लोगों से भी हम कहते हैं कि भाई आप जाकर के देखो। हम लोगों को जो फीडबैक लोगों की तरफ से मिलता रहा इस दौरान, वो यही मिलता रहा है कि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी की जिंदगी में जो रोजाना जो लूट खसोट थी, उस पर लगाम लगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने अभी तक तो कोई ऐसी स्टडी नहीं की है। जैसे बोली गई पब्लिश या अनपब्लिश रिपोर्ट, ऐसी हमारे पास कोई रिपोर्ट भी नहीं है और ना ऐसी कोई रिपोर्ट है जो अनपब्लिश भी है। तो हमारी तरफ से ना कोई ऐसा सर्वे हुआ है, ना कोई ऐसी रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है। अब आम आदमी पार्टी ने क्या कमेंट दिया वो वही बता सकते हैं। इसमें हमने क्लैरिफिकेशन इश्यू किया है कि ऐसा हमने कोई सर्वे ही नहीं किया है, तो बेहतर होगा आम आदमी पार्टी बताए। बट हमारा पोजीशन बहुत क्लियर है, ना हमने कोई ऐसा सर्वे किया है, ना कोई ऐसे सर्वे करने का प्लान है। हमारा तो ऑब्जेक्शन है, इसीलिए हम लोगों ने उस न्यूज़पेपर को भी लिखा है कि क्यों ऐसी चीजें छापी गई हैं। और आज हमारी बोर्ड मीटिंग होगी और हम उसके बाद एक डिसीजन लेंगे और बोर्ड मीटिंग के बाद में जो डिसीजन होगा हम कन्वे करेंगे मीडिया को।